जैसे आप देख रहे हैं हवा बहुत तेज़ है, स्कूटी की रफ्तार और भी तेज़ है। और मैं फिर से कर रही हूँ वॉइस ओवर क्योंकि आपका आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही होगी। तो मैं जा रही हूँ काबो दे रामा बीच, जो कि है 22 टू 23 किलोमीटर्स पैलोलेम बीच से, जहाँ पर मैं रह रही हूँ। तो यहाँ मैं थोड़ी देर रुक गई थी टू क्लिक सम पिक्चर्स क्योंकि व्यू बहुत ही अमेजिंग लग रहा था। तो मैंने ऑन द वे देखा कि काबो दे रामा बीच के पास और भी बीचेस हैं जो मैं आते हुए एक्सप्लोर करूँगी। अभी जाना वहाँ पे बनता नहीं क्योंकि वापस तो आना ही था। Your destination is on the right. You should have standard. ये एरिया स्टेयर्स बहुत ही ब्यूटीफुल है। और मुझे बहुत ही केयरफुल होकर जाना पड़ जाता है क्योंकि ये टूटी फूटी है और थोड़ा घाटी एरिया है ये। तो यहाँ पर मैं थोड़ा टाइम स्पेंड कर रही हूँ, लाइक हाफ एन आवर, क्योंकि बहुत ही सुंदर जगह लग रही है मुझे। पर धूप बहुत तेज़ है और मैं बहुत स्वेटिंग कर रही हूँ। डायरेक्ट सन आ रहा है बट बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है ये। पर ड्रॉ के बहुत संभाल के, मैं गिरने भी वाली थी बट मैंने खुद को संभाल लिया। तो मैं आधा घंटा बैठती हूँ यहाँ।
स्कूटी चल रही है, मज़ा आ रहा है बाइक स्कूटी राइड में। बाइक होती तो और भी मज़ा आता, पर स्कूटी में भी बहुत मज़ा आ रहा है। ठंड लग रही है लिटरली, मैं एक जैकेट लेकर आई हूँ तो अभी वो पहन लूँगी। कुछ घर तो ऐसे हैं जो मेरा लिटरली मन कर रहा है मैं ले लूँ, खरीद लूँ। Agonda Beach Road. तो मैं आ चुकी हूँ अगोंडा बीच और यहाँ का सनसेट एंजॉय कर रही हूँ। हल्का सा चांद निकल आया है, शायद आपको कैमरे में ना दिखे, और बहुत प्यारा मौसम हो रहा है। लोग ज़्यादा नहीं है क्योंकि काफ़ी बड़ा बीच है, तो लोग जस्ट वॉक कर रहे हैं। एंड इट्स प्रीटी, इट्स अ ब्यूटीफुल सनसेट, सो प्रीटी।